नौजवान दुबुलगुंडी की तरफ से इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम किया गया। दुबुलगुंडी जामा मस्जिद में इंतज़ाम किया गया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने मिलकर भाईचारगी का पैगाम दिया। आइए देखते हैं तहरीक न्यूज़ की ख़ास रिपोर्ट। आज के दिन मस्जिद दर्शन बोल के हमारे दुबुलगुंडी प्रोग्राम मस्जिद जामे मस्जिद में प्रोग्राम के रखा गया था। हमारे गांव के सभी हिंदू भाई बहन भाई लोग, सभी जात के समाज के लोग को सबको इनवाइट किए गए थे। सभी लोग आके हमारी इफ्तार मस्जिद दर्शन में भाग लिए, इसलिए हमको बहुत खुश लगा। इसलिए इसी तरह हमारे गांव में एक दूसरे से भाईचारा रहना बोल के हम इस टाइप से एक प्रोग्राम बनाए। आगे चल के इसी टाइप पे रहेंगे हम सभी लोग बोल के मेरे दिल खुशी सी बात दे देता हूँ सभी को। माशाल्लाह आज 17 रमज़ान मुबारक को जामा मस्जिद दुबुलगुंडी ख़ासकर हमारे मोहसिन और जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से और मोहसिन सवार और जितने भी नौजवान हैं सब मिल कर के अल्हम्दुलिल्लाह आज एक प्रोग्राम रखे थे मस्जिद दर्शन के नाम पर। हम ताकि अपने अभी मोहसिन आ जाओ, तो मस्जिद दर्शन के नाम से जो है प्रोग्राम रखा गया था और माशाल्लाह उसमें हमारे प्रोफेसर जाकिर साहब वो भी आए हुए थे और साथ में हमारे जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार हज़रत मौलाना कलीमुल्लाह साहब भी तशरीफ़ लाए हुए और मोहम्मद इफ्तिखार अहमद साहब भी तशरीफ़ लाए हुए थे। माशाल्लाह बड़ा कामयाब प्रोग्राम रहा और हम ये मैसेज देना चाहते हैं दुबुलगुंडी के बाशिंदों की तरफ से कि इस तरह के प्रोग्राम हम हर जगह करनी चाहिए और वतनी भाइयों को बुला करके उनको मस्जिद दर्शन करानी चाहिए और हमारी नमाज और हमारी अज़ान और हमारी इबादतें उनको बतलानी चाहिए, ताकि उससे उनके जहनों में इस्लाम की मोहब्बत हो और मुसलमानों की मोहब्बत है। और क्योंकि मस्जिद तो ये अल्लाह का घर है और अल्लाह का मतलब एक भगवान और खुदा गॉड का घर है ये, तो गॉड के घर में तो हर कोई आना जाना चाहिए। यहाँ पर तो ऐसी कोई दूसरी चीज़ें होती नहीं हैं। आएंगे तो जो भी हमारा भाई मस्जिद में आएगा देखेगा तो उसको मालूम होगा कि मस्जिद में क्या है। यहाँ पर अमन अमान की और शांति की और प्यार मोहब्बत की तालीम भी दी जाती है और एक अल्लाह से जोड़ा जाता है, अल्लाह की इबादत और बंदगी करने को बताया जाता है, ताकि इंसान दिन भर की थकान और टेंशन और डिप्रेशन को दूर कर करके दिन में 5 मरतबा अल्लाह के पास आएगा और अपने आप को वज़ू करके अपने सारे ज़ाहिरी और गंदगी को धुल करके नमाज पढ़ के अपनी बातिन की गंदगी को धुलने के लिए आया जाता है। और ये मैसेज हमारी तरफ से था। आज हमारे प्रोफेसर जाकिर साहब ने भी माशाल्लाह असर से लेकर के पूरा इफ्तार तक इस बात को बताया कि इस्लाम क्या चीज़ सिखाता है, नमाज क्या है और अज़ान क्या है और मस्जिद क्या होता है। मस्जिद एक अल्लाह का घर होता है। हमारे वतनी भाई जो हर मज़हब के मानने वाला अपने अपने तौर पर अल्लाह को एक नाम दिए हुए हैं, तो जैसे मुसलमान अल्लाह कहता है तो कोई दीगर मज़ाहिब वाले ईश्वर कहते हैं, कोई कुछ और नाम से पुकारता है और उसमें अंग्रेज़ी में उसको जिसको गॉड कहा जाता है। तो हम लोग एक खुदा की मानने वाले हैं और उसी की इबादत और बंदगी करने वाले हैं। मैं आखिर में फिर एक मरतबा सारे दुबुलगुंडी के मुसलमान और दुबुलगुंडी के दीगर मज़ाहिब के लोगों की तरफ से भी सारे इंसानों को, पूरी दुनिया भर के इंसानों को, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग प्यार मोहब्बत के साथ, जैसा दुबुलगुंडी में रह रहे हैं आप लोग भी प्यार मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ में ज़िंदगी बसर करें और एक दूसरे को मान सम्मान देते हुए और एक मानवता का पैगाम लेकर के खड़े रहें। क्योंकि इंसान है सारे, कोई ऐसा नहीं है कि किसी इंसान, सबके शरीर में खून है। ऐसा नहीं है कि किसी के बॉडी को अगर चीरा जाए तो मुसलमान के इसमें खून निकलेगा और दीगर मज़ाहिब के मानने वालों में किसी में डीजल किसी में पेट्रोल निकलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब इंसान है और सारे के शरीर में खून निकलने वाला है। सब मिलजुल करके प्यार मोहब्बत के साथ रहनी चाहिए, प्यार मोहब्बत के दीप जलानी चाहिए। मैं इसी पर अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। 3 ದಿವಸ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಈ ರಂಜಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದುಬುಲಗುಂಡಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಬಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ತಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು ಕರೆಸಿ ಇವತ್ತೇನು ನಮಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಥ ನಮ್ಮದು ಹುಮನಾಬಾದ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ನಂಬಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರು ಉಪವಾಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇವು, ಒಣ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ಬೇಕು.
ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಬಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ತದ ಅವನಿಗೆ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ತದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಿವಿಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದಾಗ್ತದ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವ್ ಏಟೇ ಗಳಿಸ್ಲಿ, ನಾವ್ ಏಟೇ ಇದಾಗ್ಲಿ, ಸೋದರ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಎಲ್ಲಾ ಏನಂತಂದ್ರ ಇದ್ರದಿಂದ ಏನಂತ ನಾವು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೇವಂತಂದ್ರ ನಮ್ ಜೀವನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಹೇಗನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್, ಒಂದು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಮಜೀದ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ಹಾ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನದ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಗುರುಜಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಮಸ್ಜಿದ್, ಅದು ಶಿವಾಲಯ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನ. ಆ ತರ ಏನಂತಂದ್ರ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರ ಯಾವುದೇ ಕುಲ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಂತಂದ್ರ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರ ಇದು ಮಾಡಿದಾರ, ಆ ರೀತಿ ಏನಂತ ನಮಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇವತ್ತ ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಮೈನಾರಿಟಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು. ಇದರಿಂದ ಏನಂತಂದ್ರ ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ನಾವು ನಮ್ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ದೇವ್ರು, ಅದೇ ಮೇಲ. ಅದ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಜನರು ಮಾಡಿದಾರ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಕುಂತಿದ್ವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಕರೆದಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತಿಗೆ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪವಿತ್ರ ದಿನವೊಂದು ಆಚರಣೆ ನಡೆದದ. ಇದು ಆಚರಣೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನವ ಯುವಕರ ಬಳಿ ಇಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಸ್ಜಿದ್ ದರ್ಶನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗ ಭಾಗಿಯಿದ್ದೆವು. ಇದೇ ಥರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮದಾಗ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅದ. ಇದೇ ಥರ ನಡಿಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸ್ತೇವೆ.